teachers and trainers, professors and professionals, listeners and learners, those who are listening, watching from the field of arts. It is really nice time, nice place, nice section. You are listening and watching the truth, science to spirituality, language to literature, the most honorable President National Modi ji, respected ministers and doctors, honorable advocates, advertisers, administrators and advisors, reverend fathers and mothers, affectionate sons and daughters. I, Dr. Rakesh from USA, heartily cordially welcome all of you. You are really praiseworthy, appreciable that you are listening regarding research. The call number in your library has classification. The Library of Congress system learning your library system will not only help you to find works and know their contents from their call numbers, but also guide you to sections of the library in which to browse. The Library of Congress system divides books into 20 major groups. A for general works, B for philosophy, psychology and religion, C for general history, D for world history, E to F American history, G geography and anthropology, H social sciences, J political science, K law, L education, M music, fine arts, E language and literature, Q science, R medicine, S agriculture, T technology, U military science, V naval science, Z bibliography and library sciences. The Dewey Decimal System classifies books under 10 major headings. 000 general works, 100 philosophy and psychology, 200 religion, 300 social sciences, 400 language, 500 natural sciences and mathematics, 600 technology and applied sciences, 700 fine arts, 800 literature, 900 geography and history. Location of library materials. The library catalog normally indicates not only the call number for a title but also the section in which to find the work, whether in the main collection or in a different location. It may also indicate if a title is checked out, missing at the bindery or on order. Check with the circulation desk to see if it is possible to recall or search for a missing book. Open shelves and close the stocks. Most library holdings are kept on open shelves to which the public has direct access. To obtain a work in closed stocks,
You usually have to present a call slip to a library staff member who will locate the work for you. Selection for reversed selections for reserved works and reference works. If the word reserved appears in a catalog entry, it indicates that the work is required in a course and stored in a special section at the instructor's request, so that the work may not be borrowed but stays available for students in the course. Works shall be in the reference section designated in the catalog entry by R or RTF is too widely used to be borrowed and thus must also remain in library. Other sections. Libraries also commonly set aside areas for other types of materials. Current periodicals, pamphlets and non-print materials like CD-ROMs, films and audio-video recordings. Some libraries have additional special collections such as rare books or government documents that are similarly kept separate from the main collection. Consult the library directory or a librarian for locations. Full text databases. Modern academic libraries subscribe to and make generally available a wide variety of databases, not only those containing bibliographic citations and abstracts, which guide researchers to relevant sources, but also full text databases which offer complete text of many sources. Your library likely subscribes to full text databases of reference works and other book length text, as well as of articles from periodicals. Periodicals like newspapers, magazines, scholarly journals. Some of these databases may be limited to use in the library, but many probably can also be accessed from outside through the library's website. Virtually all full text databases are searchable by author, title and subject and through more sophisticated strategies. Reference works and other book length text. Online reference works to which libraries typically subscribe include the Oxford English Dictionary, the New Encyclopedia Britannica, American National Biography, the Grove Dictionary of Art Online, and Rootless Encyclopedia of Philosophy. Other book-length text may also be available to you through library subscriptions. One ambitious project is the University of Chicago's Project for American and French Research on the Treasury of the French Language, which is a collection of nearly 2,000 French texts from the 17th to the 20th century, ranging from classic works of French literature to non-fiction prose and technical writing. Similarly, the Digital History Book Project, a collaboration among the University of Pennsylvania's library, Oxford University Press, and Cambridge University Press, includes over 400 books in its databases. Articles in periodicals. Many full text databases to which academic libraries subscribe comprise articles from periodicals like newspapers, magazines, and especially scholarly journals. Major newspapers like the New York Times and Wall Street Journal
are available individually through library subscription. Major scholarly journal publishers. Those that issue numerous journals, often in different fields, permit libraries to subscribe to databases containing all journals that each press publishes. Such publishers include Academic Press, American Chemical Society, American Mathematical Society, Cambridge University Press, Elsevier, Oxford University Press, University of Chicago Press, and Wiley. Thus, the subscription to, for example, American Mathematical Society journals gives access to all journals published by that society. A scholarly journal achieve collects articles from journals published by different presses. JSTOR, for instance, is a collection of articles from over 100 scholarly journals in such fields as the humanities, the social sciences, the natural sciences, and business. Database subscription services. Information service companies such as EBSCO, InfoTrack, and LexisNexis amass huge numbers of bibliographic and full text materials. Organize these materials into different kinds of databases and offer these databases often in different combinations by subscription to academic libraries. Some typical packages of databases are EBSCO. Your library may subscribe to a number of EBSCO's bibliographic databases as well as to its full text databases such as Academic Search Premier. Articles from over 3,000 scholarly publications in all major disciplines. Business Source Premier. Articles from over 2,000 scholarly business journals. Health Source. Article from over 500 scholarly medical journals. Newspaper Source. Articles from some 200 United States and international newspapers. And Master File Premier. Articles from nearly 2,000 periodicals on a variety of subjects, including general reference, business and health. InfoTrack. The following is a typical package of InfoTrack databases to which a library might subscribe: custom newspapers, articles from, for example, the New York Times, the Wall Street Journal, and local newspapers selected by the library. General Reference Center, articles from reference books, magazines and newspapers on topics of general interest. For example, current events, popular culture, arts, sciences. Health Reference Center, articles on topics related to health. For example, medicine, nutrition, disease, public health, occupational health and safety. Business and Company Resource Center, company profiles, brand information, investment reports, etc. Contemporary authors means bibliographical and bibliographic information on thousands of authors and contemporary literary criticism. Critical introductions to modern authors. LexisNexis. LexisNexis Academic Universe, one of many products and services provided by this company, collects material from over 5,000 publications and organizes information under information needed for list of works cited. Most documents in databases were previously or simultaneously published in print form. Therefore, most bibliographic citations of database sources begin
With the publication information the database supplies for the print version of the source. The citation then continues with facts about the electronic publication. Subscription databases vary considerably in the amount and kind of electronic publication information they furnish, and bibliographic citations of these sources vary accordingly. For some sources, a URL, Uniform Resource Locator, or network address of the specific document is available. For others, a URL of only a search page must be given, and for still others, no URL can be cited. URL of specific document. Some databases connect you to an internet site, give relatively short and logical URLs for each document, and even provide main documentation information for each document. For example, the information in Figure 5 appears at the end of an entry in the electronic databases for American National Library. Such information makes it easy to create a bibliographic entry for the source using MLS style. URL of such page. Sometimes the URL of a document is so long and complicated that reproducing it would invite transcription errors or would at least cause inconvenience. In such instances, it is preferable to give instead the URL of the site's search page. If such a page exists, once there, the reader can readily access the document by keying in other publication facts recorded in the citation, for example, author's name, author's title. No URL. Some database subscription services assign no apparent URLs to documents or assign URLs that are unique to the subscribing institution or to the current research session. Such URLs are useless to the general reader. For example, an article that Sami Joachim published in 2001 in American Family Physician is included in InfoTrax databases Health Reference Center. When you access this article from the Bergen County Cooperative Library System in New Jersey, you find that its URL contains over 130 characters and concludes with the suffix which is unique to this library system. Consequently, the URL of the article has no value for anyone without access to the system and has virtually no value for anyone who does. For you can locate the article which more easily by using the search page of the database than by typing in the URL. When writing the bibliographic citation for the source, then you may conclude not with the URL of the document but rather with the URL of the home page of the service. If you know it, or you may simply end with the data of access. Other library resources and services. Besides knowing about the print and non-print materials discussed here, you should become familiar with the library's other resources and services. Microforms. Microform designates printed matter greatly reduced in size by microphotography. Common types are microfilm, microfiche, and microcard. Libraries use microforms to store such materials as back copies of periodicals like newspapers, magazines, scholarly journals, and rare books. Microforms are usually kept in a special section of the library. To use them, you need a reader that magnifies them. A special photocopier then reproduce microform pages. Library staff members are usually on hand to assist researchers in locating microform materials
and operating the readers and photocopiers. Media Center. Many libraries have a special section devoted to audio recordings, for example, compact disc, audio tapes, long playing records, video recording, for example, on VHS or DVD, and multimedia materials. These resources are generally kept in closed stocks and used only in the library, although there may be exceptions, such as for use in the classroom, electronic and other resources. Photocopying machines are typically located at various sites in the library, as are in computer terminals that give access to the central catalog and other databases and to the internet. Your school may also permit students to borrow laptop computers with internet connections for use in the library. Some schools have electronic resources centers in the library as well. Such centers provide for student use a variety of software applications for tasks such as word processing, spreadsheet analysis, database management, desktop publishing, drawing, image processing, and drafting. Output services might include high quality printing, CD mastering, and image and text scanning. Some schools have facilities for photographic, audio, and video production. Interlibrary launch. Most libraries have agreements. Most libraries have agreements for the exchange of research materials on a regional, statewide, national, or even international basis. If your library does not have the materials, you need ask whether it can borrow them from another library. If it can, ask your librarian for help in initiating an inter-library loan. Finding the source in a nearby library rather than a far-away one will save considerable time. To discover which library is from your title, you may search other library catalog included in your library's central information system or consult such databases as the Online Computer Library Center or the Research Libraries Information Network if they are available to you, or you can consult such print sources as National Union Catalog for book holdings at other libraries, or Union List of serials and new serials titles for periodicals. Internet sources. Range of sources. Researchers regularly use facts and ideas from internet sources to complement those derived from traditional print sources through the World Wide Web. A researcher can read and transfer material from library catalogs and millions of other useful sites created by professional organizations. For example, American Chemical Society, American Philosophical Association, government agencies, for example, Library of Congress, Bureau of the Census, commercial enterprises, for example, publication of encyclopedias, news organizations, educational entities, for example, universities, libraries, academic departments, research centers, scholarly projects, and individual scholars. These sites provide only one. These sites provide not only information sources but also the full text of documents such as historical papers, library and religious works, and articles in periodicals, for example, journals, magazines, newspapers, and audiovisual materials, for example, photographs, paintings, sound and video recordings. Using recommended sites, even those who are familiar with the World Wide Web find that using it to do research requires practice and training
just as using a library does. Therefore, whenever possible, follow the guidance of an instructor, an academic department, or a librarian in selecting internet sites for research. In addition to online databases available through subscription, your library may recommend important internet sources that were likely to be selected after careful evaluation and consultation. Check the library's website for links to such resources. A librarian might also be able to advise you about sites relevant to your research. Similarly, you may find sites recommended by academic departments and individual instructors on web pages for the department, the instructors, or the course. Gateway sites. Your librarian or instructor might direct you to a meta page or gateway that provides links to other sites. Examples of gateway sites: Voice of the Shuttle. University of California, Santa Barbara offers on its homepage a menu of subjects in the humanities: anthropology, archaeology, architecture, history, literature, philosophy, and so forth. Selecting media studies, for example, gives you a list of specific fields, for example, journalism, television, film and video, popular music, comics, and cyber culture. The choice of media history and theory presents links to numerous sources in this area. Professional organizations, bibliographies, chronologies, journals, articles and papers, course descriptions and other related sites, including some created and maintained by scholars in media studies. The home page also provides general links to libraries and museums, reference works, journals, publishers and booksellers, email discussions and news groups, conferences and travel resources. Social Science Information Gateway likewise presents a menu of subjects: business, economics, education, psychology, sociology, and so forth. If you click on sociology, you receive a list of specific subject areas. The sociology of, for example, adolescents, children, gender, law and crime, medicine, race and ethnicity, religion, sport, wow. Selecting one of these areas yields links to relevant articles, papers, reports, bibliographies, data, educational materials, government publications, journals, discussion groups, professional organizations, research projects, and resource guides. Women's Studies databases allows the researchers to choose from such categories as the following: conferences, announcements, bibliographies, syllabi, film reviews, gender issues, other websites and references room. If you choose the last of these, you receive links to academic papers, book reviews, fiction, history, non-fiction and poetry. Peer-reviewed sites. Some gateway sites are referred, for example, is a peer-reviewed limited area search engine designed for students, teachers and scholars of the ancient and medieval worlds. An editorial board of specialists reviews and approves each site before it is included in this search engine. The home page of Agros contains a list of these associate sites such as Abzu, Guide to Resources for the Study of the Ancient Near East, available on the internet. University of Chicago. Byzantine Studies on the internet, Fordham University. Diotima, Materials for the Study of Women and Gender in the Ancient World,
University of Kentucky, the Labyrinth Resources for Medieval Studies, Georgetown University, Persis Digital Library, searching the internet. Search tools. If you are working without professional guidance, whether developing a research topic or looking for research sources, use the source tools created to help locate internet materials. Common ways to conduct searches with these tools are by subject and by keyword. Some search tools such as Google and Yahoo offer hierarchically arranged subject directories through which you can navigate until you find specific topics you wish to explore. Google, if you click on the subject arts on the directory page for Google, you might receive a list of categories like architecture, history, classical studies, humanities and literature. Choosing humanities would lead you to a list containing anthropology, history, language, philosophy and so on. The subject history might offer such selections as by region, by time period and by topic. If you choose 16th century from the list of periods, you could receive a choice of two topics, Reformation and Renaissance. Selecting the latter would result in a list of relevant websites including plague and public health in Renaissance Europe. In ranking a website, Google takes into account the number of links there are to the sites as well as the importance and quality of the link. Yahoo. Similarly, if you select humanities, among the categories listed in the Yahoo directory, you might receive a list of such categories: classics, critical theory, culture studies, history, literature, medical humanities, philosophy and theology. The selection medical humanities would lead you to biomedical ethics, which would prompt another set of subtopics, specific searches. If you know at the outset the exact topic you wish to research, you can perform a keyword search, which produces a listing of files containing the word or words you specify. To avoid long lists containing many irrelevant sites, be as specific as possible in your commands. Thus, human cloning will yield a shorter, more unified list than cloning alone would. Most search tools offer instructions on how to phrase search requests for the best results. You can often use Boolean and other operators to make searches precise. Current issues and current events. The internet is particularly helpful when you want to find materials related to current issues and current events. The website newsdirectory.com provides thousands of links to online newspapers, magazines, television stations, and other media. Bookmarking and recording the URL. Bookmarking and recording the URL. Whenever you discover what seems a useful document or site, be sure to add it to your bookmark or favorites list. In so doing, you can easily return to the source for further information or clarification. If you cannot use a bookmark, perhaps because you share a computer, keep a precise record of the URL. If any event, you may want to keep a
log of all sites you visit, whether or not you initially bookmark them, since a site you originally passed over may seem more useful later. Recording the data of access. Always make note of the data or dates on which you consult a source. The date of access is important because the material could be revised after you visit the site. The URL and the data of access are items of information you will need for your working bibliography and your list of works cited. Internet sources among other sources. Whereas many instructors encourage using internet sources, few consider a search of the World Wide Web alone adequate research for most research papers. Instructors generally require that other materials, including print publications, be sought. Similarly, email discussion list and online chat rooms are helpful for sharing ideas but are rarely deemed acceptable resources for research papers. In summing up, we can say your school library is likely to be your most reliable guide when you conduct research. You should therefore become as familiar as possible with the library's print and electronic resources and its various services. Library resources include books and similar publications, for example, pamphlets, print periodicals, for example, journals, newspapers, magazines, miscellaneous print and non-print sources, for example, sound and video recordings, electronic resources, for example, online catalog of holdings, reference works, bibliographic and full text databases. Library services may include a media center, photocopying machines, access to computers, use of software application, printers, scanning devices, and other hardware. Interlibrary launch. Useful internet sources are sites recommended by instructors and librarians. Gateway sites, peer-reviewed sites, compiling a working bibliography. Keeping track of sources. As you discover information and opinions on your topic, you should keep track of sources that you may use for your paper. A record of such sources is called a working bibliography. Your preliminary reading will probably provide the first title for this list. Other titles will emerge when you consult reference works and the library's central catalog and when you explore the internet. If you read carefully through the bibliography and notes of each work you consult, more often than not you will discover additional important sources. Your working bibliography will frequently change during your research as you add titles and eliminate those that do not prove useful and as you probe and emphasize some aspects of your subject in preference to others. The working bibliography will eventually evolve into the list of works cited that appears at the end of the research paper. Creating a computer file for the working bibliography. A computer is particularly useful for compiling the working bibliography. Create a computer file for the purpose and enter full information about sources into the file as you proceed with your research. Whenever you wish to add new works to the list, to remove works you no longer think helpful, or to correct entries already stored, you retrieve the file, make the changes and save the revised file for future use. As you research, you can arrange and rearrange your sources however you wish, for example, in alphabetical order, in chronological order, by date of publication, in order of relevance to your topic. You can also divide sources into groups, for example, those already consulted and those not yet consulted, those most useful and those less so. At any point, you can print the file to review it or to use it for research. Since bibliography files are essential to researching and
writing the paper. Be certain to save these files and to keep copies of them on paper and on a backup disk. Recording essential publication information. When you add sources to a working bibliography, be sure you enter all the publication information needed for the works cited list. The information to be recorded depends on the kind of source used. What kind of sources are being used? It depends upon them. Noting other useful information. Besides the data needed for the works cited list, it is useful to add other information to items in the working bibliography. For example, if you derive a source from a bibliographic work, record where you found the reference in case you need to recheck it. Always also note the library call number, the network address URL, or other identifying information required to locate each work. Verifying publication information. Whenever you consult a source, carefully verify the publication facts against your records, even if you have printed out or downloaded the data. नमस्ते। दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं भोजन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। भोजन की आचार संहिता हम सब भली भांति जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए भोजन का विशेष महत्व है। भोजन में क्या क्या खाया जाए, जहाँ इस बात का महत्व है वहाँ यह भी जानना बहुत महत्व रखता है
कि भोजन किस प्रकार और किन परिस्थितियों में किया जाए। इन सब बातों पर विचार कर तदनुरूप आचरण करके हम भोजन से पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। भोजन के संदर्भ में आयुर्वेदानुसार कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं। स्निग्ध भोजन, हमारे भोजन में घी, तेल आदि प्राकृतिक स्निग्ध द्रव्य उचित मात्रा में होने चाहिए। आजकल हृदय रोग, ब्लड प्रेशर और मोटापा आदि के डर से प्राय लोग घी आदि का प्रयोग बिल्कुल न करके रूखा भोजन करते हैं। यह सर्वथा अनुचित है, क्योंकि जहाँ घी, तेल आदि से भोजन स्वादिष्ट बनता है और रुचि उत्पन्न होती है, वहीं भोजन मुलायम भी बनता है। इससे पाचन अग्नि तीव्र होती है, भोजन सुपाच्य बनता है, बल व आयु की वृद्धि होती है, इंद्रियां दृढ़ बनती हैं और रंग में निखार आता है। घी आदि स्निग्ध पदार्थों के सेवन से वात का अनुलोमन होता है और मल विसर्जन में भी सुविधा होती है। अतः घी का सर्वथा त्याग करने की अपेक्षा आराम मतलबी का त्याग कर शर्मशीलता व व्यायामशीलता अपनानी चाहिए। ऐसा करने पर स्निग्ध भोजन के लाभ से वंचित नहीं होना पड़ेगा। ताजा और गर्म भोजन, भोजन हमेशा ताजा और गर्म होना चाहिए। ऐसा भोजन स्वादिष्ट होने के साथ पाचक अग्नि को बढ़ाने वाला, सुपाच्य और वात का अनुलोमक होता है। यह पौष्टिक भी होता है, जबकि वासी और ठंडा भोजन भारी, तामसिक और अपौष्टिक होता है। आयुर्वेद के अनुसार आहार को फ्रिज आदि में रखकर बाद में गर्म करके खाना उचित नहीं है। न ही प्रिजर्वेटिव्स आदि पदार्थ डालकर भोजन को सुरक्षित रखने और डिब्बाबंद पेय, केक, पेस्ट्रीज आदि के सेवन को उचित माना है। आज दुनिया में महामारी की तरह बढ़ते हुए मोटापे का कारण भी जंक फूड, फास्ट फूड व डिब्बाबंद फूड है। इस विषय में हम सबको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अधिकांश रोग अनुचित आहार सेवन से ही उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों में प्राकृतिक फल या फूल, जूस एवं ताजा बने भोजन के सेवन को उत्तम माना है। भोजन की सुंदरता, भोजन का रंग, गंध, स्वाद तथा स्पर्श रुचिकर होना चाहिए और देखते ही भोजन के प्रति रुचि का अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार दूसरे पाचक रसों का स्राव भी अनुकूल रूप से होता है। अतः भोजन में रुचि बढ़ाने के लिए भोजन और पात्रों का स्वच्छ, सुंदर और आकर्षण होना चाहिए। रोगी के लिए तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि निरंतर एक प्रकार का पथ्य भोजन खाने से उसमें अरुचि उत्पन्न हो सकती है। सुंदर और एकांत स्थान, भोजन के साथ साथ उसके सेवन के लिए स्थान भी साफ सुथरा, सुंदर, आकर्षक और एकांत होना चाहिए। परंतु यदि उस स्थान पर अन्य लोग हों तो सभी लोग साथ में भोजन करने वाले होने चाहिए। पवित्र और सुंदर स्थान में मन शांत रहता है, जबकि गंदे और अपवित्र स्थान पर बैठने से मन में अशांति होती है। इसका भोजन के पाचन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। भोजन सेवन की क्रिया को एक पवित्र धार्मिक अग्निहोत्र रूप क्रिया समझकर करना चाहिए। अतः इस समय मन पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए। भोजन करते समय बातें करना, टेलीविजन देखने, टेलीफोन सुनने आदि से दूर ही रहना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार जूते आदि पहनकर भोजन का निषेध किया गया है। जूतों के कारण पैरों को उष्णता हमारी जठराग्नि को मंद करती है
इससे अनेक रोग हो सकते हैं। इसलिए आयुर्वेद में भोजन करने से पहले हाथ पैर धोने और जमीन पर बैठकर भोजन करने का विधान है। खड़े खड़े भोजन नहीं करना चाहिए। घर में पहले परम इष्ट देव व भोजन को देने वाले परमात्मा का ध्यान करके तथा उसे धन्यवाद देकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पहले आचमन अर्थात 2-3 घूंट जल पीना चाहिए, जिससे गले की कफ निवृत्ति एवं जठराग्नि की वृद्धि होती है। फिर शांति पूर्वक जो अन्न हाथ से खाया जा सकता हो उसे हाथ से ही खाना चाहिए। इससे जहाँ भोजन के ठंडा गर्म होने का पता चलता है, वहीं हाथों के स्पर्श से भोजन के प्रति प्रेम व रुचि भी बढ़ती है। यदि जमीन के आसन पर बैठकर भोजन नहीं कर सकते हैं तो कुर्सी आदि पर बैठकर भोजन किया जा सकता है, परंतु खड़े खड़े या चलते हुए तो कदापि भोजन नहीं करना चाहिए। मानसिक दशा, भोजन हमेशा शांत और प्रसन्न मन से ग्रहण करना चाहिए। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, घबराहट, डर आदि की दशा में जहाँ भोजन का स्वाद नहीं आता, वहीं पाचक रसों का स्राव भी ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। इससे भोजन का पाचन समुचित रूप से नहीं हो पाता। अतः भोजन करते समय किसी प्रकार की अप्रिय चर्चा नहीं करनी चाहिए और न ही सुननी और देखनी चाहिए। भोजन का उचित समय काल भोजनम आरोग्य प्रणाम, चरक संहिता सूत्र स्थान 25.40 में समय पर भोजन करना आरोग्य के लिए श्रेष्ठ उपाय है। भोजन के ठीक प्रकार से पाचन के लिए आवश्यक है कि इसका सेवन ठीक और नियत समय पर किया जाए। उचित समय पहचानने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भूख का अनुभव हो, पहले किया गया भोजन अच्छी तरह से पच चुका हो, जब हृदय और पेट में भारीपन न हो, वात का अनुलोमन हो जाए एवं मल मूत्र का त्याग हो चुका हो, तब भोजन करना चाहिए। अन्यथा पूर्व भोजन का अधपचा रस और किए जा रहे भोजन का रस आपस में मिलकर सभी दोषों को कुपित कर देंगे और रोगों की उत्पत्ति होगी। पित्त वृद्धि के समय मध्याह्न 12 से 2 बजे तक के समय में भोजन किया जाए तो इससे भोजन शीघ्र और अधिक अंश में पचता है। परिणामतः शरीर अधिक पुष्ट होता है। ऐसा देखने में आता है कि भोजन का निश्चित समय आने पर अपने आप ही कुछ खाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। इस समय भोजन अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि तब पाचक रसों का स्राव पर्याप्त मात्रा में होता है। यदि ऐसे समय भोजन न किया जाए तो पित्त कुपित हो जाता है तथा शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार नियत समय बीत जाने के बाद वात का प्रकोप हो जाता है, इससे पाचन शक्ति मंद हो जाती है। ऐसे में भोजन का पाचन ठीक तरह से नहीं होता। यदि भूख लगने पर भी भोजन न किया जाए तो शरीर में कमजोरी, कृष्णता, अंगवर्ध, शरीर का दर्द से टूटना, तंद्रा या सुस्ती, थकावट, अरुचि, त्वचा के रंग में बदलाव, दृष्टि में कमी आदि विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अतः उचित और नियत समय पर भोजन करना आवश्यक है। भोजन की मात्रा, पूरे पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए भोजन का सेवन संतुलित मात्रा में करना चाहिए। भोजन के बाद पेट का 1/3 भाग खाली रहना चाहिए, जिससे पाचक रस और कफ भोजन के साथ अच्छी तरह मिलकर उसका पाचन कर सकें और वात की गति भी ठीक प्रकार से हो सके। भोजन के बाद यदि पेट में दबाव व भारीपन और पार्श्वों में तनाव न हो, छाती में रुकावट और भारीपन न हो, भूख प्यास शांत हो, उठने बैठने, सोने, चलने, हंसने, श्वास लेने और छोड़ने एवं बातचीत करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो, तो समझना चाहिए कि भोजन की मात्रा उचित है। इसी प्रकार प्रातः ग्रहण किए भोजन का सायंकाल तक तथा सायंकाल ग्रहण किए गए भोजन का प्रातः काल तक अच्छी तरह पाचन हो जाए, वात का अनुलोमन हो जाए तथा दोष धातु मल में किसी प्रकार का विकार न हो,
तो समझना चाहिए कि भोजन उचित मात्रा में लिया गया है। भोजन की मात्रा का निर्णय करने के लिए मनुष्य को अपनी प्रकृति, आयु, पाचक अग्नि की शक्ति, द्रव्यों का लघुत्व अर्थात हल्कापन और अग्नि की तीव्रता पर विचार करना चाहिए। अच्छी पाचन शक्ति होने पर यदि कुछ अधिक मात्रा में या भारी भोजन भी ले लेंगे तो अधिक कष्ट नहीं होगा, जबकि मंद अग्नि वाला व्यक्ति थोड़ा भी अधिक या भारी भोजन कर ले तो उसे कष्ट उठाना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि स्वभाव से ही लघु पदार्थों जैसे मूंग, शाली, चावल आदि का कुछ अधिक मात्रा में सेवन कर लिया जाए तो कष्ट नहीं होता, परंतु बहुत अधिक मात्रा में सेवन करने पर ये पदार्थ भी भारी पदार्थों की तरह पचेंगे नहीं। यदि उड़द जैसे भारी पदार्थों का सेवन थोड़ी मात्रा में किया जाए या अजवाइन, हींग आदि डालकर उन्हें भी सुपाच्य बना लिया जाए तो ये भारी पदार्थ भी शीघ्र पच जाते हैं। अतः इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। संक्षेप में आवश्यकता से कम मात्रा में किया गया भोजन संतोष, तृप्ति व पूरी ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाता, जबकि अधिक मात्रा में किया गया भोजन आलस्य, भारीपन, मोटापा, अपच आदि विकार उत्पन्न करता है। अतः भूख लगने पर व्यक्ति को अपनी पाचन शक्ति के अनुरूप न कम न अधिक अपितु मित अर्थात नफा तुला भोजन करना चाहिए। भोजन चबा कर खाना। सबसे पहले भोजन मुख में जाता है, जहां इसमें लाला स्त्राव अर्थात सलीवा मिलता है। भोजन को दांतों से जितना अधिक चबाया जाता है उतना ही अधिक उसमें लार का स्त्राव मिल जाता है। इससे ठोस पदार्थ द्रव्य रूप में बदल जाता है तथा भोजन की पाचन क्रिया सरलता पूर्वक संपन्न हो जाती है। इसके विपरीत ठीक प्रकार न चबाने से ठोस व कठोर पदार्थ ही निगल लिए जाते हैं। इनको आमाशय आदि कोमल अंग समुचित रूप से मुलायम नहीं बना पाते। परिणाम स्वरूप एक तो आमाशय आदि अंगों को अधिक मेहनत करनी पड़ती है जिससे वे कमजोर हो जाते हैं, नहीं हो पाता और अजीर्ण, कब्ज, गैस जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः चबाकर मुलायम किया हुआ भोजन ही निगलना चाहिए, बिना चबाए ठोस पदार्थ के रूप में नहीं। हमारे यहाँ कहा गया है कि ठोस पदार्थ को पियो, तरल को चबाकर खाओ, अर्थात ठोस को तब तक चबाओ जब तक वह तरल पेय जैसा न बन जाए। इसी प्रकार तरल पदार्थ इतना धीरे धीरे पियो कि लगे ऐसा करने पर इनका पाचन सरलता से हो जाता है। भोजन का सात समय। सातवें का अर्थ है अनुकूलता। एक पदार्थ किसी एक व्यक्ति के लिए लाभकारी हो सकता है तो दूसरे के लिए प्रतिकूल या असात्म्य और हानिकारक भी हो सकता है। यह ज्ञान मनुष्य को अपनी प्रकृति और अनुभव के आधार पर ही हो सकता है। भोजन से पूरे पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए अनुकूल भोजन का सेवन ही उचित है, जबकि प्रतिकूल पदार्थ लाभ के स्थान पर हानि पहुंचा सकते हैं। भोजन की अनुकूलता देह सातवें, जो पदार्थ व्यक्ति के शरीर के लिए उपयोगी होता है। देश सातवें, किसी विशेष स्थान में अनुकूल पदार्थ जैसे बंगाल, मद्रास, केरल, कश्मीर में रहने वालों के लिए चावल सातवें हैं। ऋतु सातवें, विशेष मौसम में हितकर पदार्थ जैसे शिशिर ऋतु में तिक्कत और रूक्ष पदार्थ सातवें होते हैं तथा ग्रीष्म ऋतु में शीतल पदार्थ। रोग सातवें, किसी विशेष रोग में हितकारक पदार्थ जैसे सर्दी, जुकाम में अदरक, शहद आदि। इन बातों को ध्यान में रखकर किया गया भोजन स्वास्थ्य की रक्षा करता है और रोगों से बचाता है। भोजन करते समय यदि इन सब नियमों का पालन किया जाए तो ऐसा भोजन शरीर को पुष्ट करता है, सभी दोषों और धातुओं को स्वस्थ अवस्था में रखता है और मल मूत्र आदि के ठीक प्रकार से विसर्जन में सहायक होता है। ये भोजन संबंधी सब नियम मिलकर ही आहार संहिता कहलाते हैं।
प्रत्येक व्यक्ति को भोजन करने के कार्य को बहुत महत्वपूर्ण और निजी कार्य समझना चाहिए। अपने व्यस्त जीवन में से भोजन का समय अपने लिए सुरक्षित रखना चाहिए और इस व्यक्तिगत कार्य को बहुत श्रद्धा और एकाग्रता से करना चाहिए। इस प्रकार पथ्य और उचित आहार लेने वाला व्यक्ति पहले तो रोगी ही नहीं होता, यदि किसी कारणवश हो भी जाए तो परहेज पूर्वक भोजन से रोग बढ़ता नहीं और स्वतः ठीक हो जाता है। इस प्रकार औषधि की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत यदि मनुष्य अच्छी से अच्छी औषधि का सेवन तो करता है परंतु पथ्य परहेज नहीं करता तो भी रोग ठीक नहीं होता, उसकी औषधि व्यर्थ हो जाती है। गलत आहार विहार या अपथ्य रोग बढ़ाने में कारण है और कारण को दूर किए बिना रोग नष्ट नहीं हो सकता। इसीलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि परहेज करने वाले रोगी को औषधि की क्या आवश्यकता और परहेज न करने वाले रोगी को भी औषधि सेवन से क्या लाभ। पथ्य आहार विहार, भोजन से संबंधित इन सब नियमों का पालन करते समय यह ध्यान भी रखना चाहिए कि जो भोजन खाया जा रहा है वह पथ्य अर्थात हितकर हो। पथ्य आहार का अर्थ है जो खाद्य पदार्थ शरीर की धातुओं को उनकी सम अवस्था में बनाए रखते हैं, विषम अर्थात असंतुलित धातुओं को सम अवस्था में लाने में सहायक होते हैं, और जो आहार शरीर के पथ अर्थात स्रोतों के लिए हानिकारक नहीं होते तथा मन को प्रिय लगते हैं, वे पथ्य या हितकर पदार्थ कहलाते हैं। इसके विपरीत जो स्रोतों को हानि पहुंचाएं, विषम धातुओं को सम अवस्था में न ला सकें तथा मन को अप्रिय लगें अर्थात हानिकारक हों, वे अपथ्य या अहितकर पदार्थ हैं। पथ्य आहार विहार का सेवन स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। ये पथ्य और अपथ्य आहार विहार भी प्रत्येक व्यक्ति की आयु, शारीरिक अवस्था, प्रकृति, रोग, द्रव्य की मात्रा, दूसरे द्रव्यों के साथ संयोग आदि के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। जो पदार्थ एक व्यक्ति के लिए पथ्य या हितकार है वही दूसरे के लिए भी पथ्य होगा यह आवश्यक नहीं है। जैसे उष्ण प्रकृति वालों को ठंडे पदार्थ पथ्य हैं पर शीत प्रकृति वालों के लिए हानिकारक, शीत प्रकृति वालों के लिए गर्म पदार्थ लाभकारी हैं तो उष्ण प्रकृति वालों के लिए नहीं। दस्त वालों के लिए दूध अपथ्य है पर दही पथ्य है, किंतु कब्ज वालों के लिए दूध पथ्य है पर दही नहीं। कुछ पदार्थ स्वभाव से ही पथ्य या हितकर होते हैं और कुछ अपथ्य अहितकर होते हैं। जैसे सस्टिक अर्थात सांठी चावल, शाली चावल, मूंग, सेंधा नमक, आंवला, मुनक्का, जौ, अंतरिक्ष जल अर्थात वर्षा का पानी, गाय का दूध, गाय का घी, मधु, ये स्वभावतः हितकर होते हैं। इसके विपरीत अधपक अर्थात कच्चे फल, अधिक तीक्ष्ण, अधिक तीखे या चरपरे पदार्थ, लाल मिर्च आदि, अधिक खट्टे पदार्थ, इमली, तथा खाद को सड़ाकर बनाए हुए या केमिकल आदि द्वारा संरक्षित पदार्थ, ये सभी स्वभाव से ही अहितकर हैं। इनमें यदि हितकर पदार्थों का सेवन मात्रा, प्रकृति आदि के अनुसार विधि पूर्वक न किया जाए तो वे भी अधिकतर पदार्थों के समान ही हो सकते हैं। अतः मात्रा, देश, आयु, ऋतु आदि का भली प्रकार विचार कर अपने लिए पथ्य आहार और विहार को लेना चाहिए। शरीर अन्न से ही बना है, अतः परीक्षा करके पथ्य आहार का सेवन करना चाहिए। लोभ अथवा अज्ञान के कारण अपथ्य आहार का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति को रोगों का शिकार होते देर नहीं लगती। जो भी आहार हम लेते हैं वह हमारे शरीर का सप्त धातुओं के रूप में आजीवन हमारे साथ रहता है। अतः एक बार भी गलत आहार या अभक्ष्य पदार्थ हम न खाएं, यही हमारे लिए शुभ है। इसी प्रकार जो भी हम विचार करते हैं वह विचार भी हमारे मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस
थैलमस सिस्टम में जाकर रसायन केमिकल के रूप में रूपांतरित हो जाता है और वह केमिकल हमारे शरीर का स्थायी हिस्सा बन जाता है। अतः एक बार भी लिया हुआ आहार, चाहे वह शराब या तंबाकू आदि हो, या दूध, शाक सब्जी, अन्न या फल आदि हो, तथा एक बार भी किया हुआ विचार, चाहे वह दुख, निराशा, तनाव, अशांति, काम, क्रोध व चिंता आदि बढ़ाने वाला हो, या सुख, शांति, संतुष्टि, तृप्ति देने व खुशी देने वाला हो, हमारे शरीर व मन का हिस्सा बन जाता है। इस प्रकार आहार व विचार का हमारे डीएनए से लेकर हमारी बॉडी के पूरे स्ट्रक्चर व कैरेक्टर पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी से हम रोगी या निरोगी होते हैं। अतः यदि हम एक बार भी गलत आहार व गलत विचार के शिकार न हो तो जीवन में सदा सुखी व स्वस्थ रह सकते हैं। विरुद्ध आहार एवं हितकारी संयोग। जिस प्रकार पथ्य या हितकारी आहार के सेवन से स्वास्थ्य की रक्षा होती है और दोष अपनी सम अवस्था में बने रहते हैं, उसी प्रकार अपथ्य या अहितकारी आहार के सेवन से स्वास्थ्य का नाश और दोषों का प्रकोप होता है। यह आहार भी अनेक प्रकार का हो सकता है। कुछ खाद्य पदार्थ तो प्रकृति से स्वभावतः ही दोषों का प्रकोप करने वाले, रोग कारक, भारी आदि होने से पथ्य होते हैं, परंतु कुछ प्राकृतिक रूप से और अकेले तो बहुत गुणकारी और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ लिया जाए अथवा किसी विशेष समय या ऋतु में या किसी विशेष वस्तु में पकाकर सेवन किया जाए तो ये लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाते हैं और अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनते हैं। ये विरुद्धा आहार कहलाते हैं, क्योंकि ये रस, रक्त आदि धातुओं को दूषित करते हैं, दोषों को प्रकोपित करते हैं तथा मलों को शरीर से बाहर नहीं निकालते। अनेक बार कुछ गंभीर रोगों की उत्पत्ति का कोई साफ कारण दिखाई नहीं देता, वस्तुत उनका विरुद्धा आहार होता है। क्योंकि आयुर्वेद में कहा है कि इस प्रकार के विरुद्धा आहार का निरंतर सेवन करते रहने से ये शरीर पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव डालते हैं और धातुओं को दूषित करते रहते हैं। अतः विरुद्धा आहार नाना रोगों का कारण बनता है। ये विरुद्धा आहार अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे देश की दृष्टि से विरुद्धा आहार, जैसे नमी प्रधान स्थानों में नमी वाले, स्निग्ध, शीतल व शीत गुण वाले पदार्थों का सेवन। नंबर 2, काल की दृष्टि से विरुद्ध आहार, जैसे शीत ऋतु में शीतल, रुक्ष, रस प्रदान एवं हल्के या लघु पदार्थों का सेवन। नंबर 3, पाचक अग्नि की दृष्टि से, जैसे मंद अग्नि वाले व्यक्ति द्वारा भारी, स्निग्ध, ठंडे और मधुर रस वाले या मीठा संयुक्त भोजन या पदार्थों का सेवन। नंबर 4, मात्रा की दृष्टि से, जैसे शहद और घी का समान मात्रा में सेवन करना विष के समान है, परंतु विषम मात्रा में सेवन करना अमृत माना जाता है। नंबर 5, सात्म्य की दृष्टि से, जैसे प्रतिदिन चावल खाने के अभ्यासी व्यक्ति द्वारा गेहूं, जौ आदि का सेवन। नंबर 6, दोषों की दृष्टि से, जैसे वात प्रकृति वाले मनुष्य द्वारा वात वर्धक पदार्थ तथा कफ प्रकृति वाले मनुष्य द्वारा कफ वर्धक पदार्थों का सेवन। नंबर 7, संस्कार या पाक की दृष्टि से, जैसे खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तन में पकाकर खाना। नंबर 8, वीर्य की दृष्टि से, शीत वीर्य पदार्थों को उष्ण वीर्य पदार्थों के साथ खाना, जैसे शीत वीर्य संतरा, मौसमी, अनानास आदि को दही तथा लस्सी के साथ सेवन करना। कोष्ठ की दृष्टि से, क्रूर कोष्ठ अर्थात वात बहुल कोष्ठ या उदर वाले व्यक्तियों में मल विसर्जन की क्रिया स्वभावतः कठिनाई से होती है। वात प्रकोप के कारण ऐसे व्यक्ति सख्त मल का त्याग करते हैं। इसी प्रकार मध्य कोष्ठ अर्थात कफ बहुल उदर वाले व्यक्ति में भी मल विसर्जन क्रिया कुछ कठिनाई से होती है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा लघु, कवच कारक, वात वर्धक व कफ वर्धक पदार्थों का सेवन करना कोष्ठ की दृष्टि से विरुद्ध आहार है। इसी प्रकार जो मृदु कोष्ठ अर्थात पित्त बहुल उदर वाले हैं, जिनमें मल विसर्जन की क्रिया सुविधा पूर्वक द्रव्य रूप में होती है, ऐसे व्यक्तियों द्वारा कटु, सर व रेचक द्रव्यों का सेवन भी कोष्ठ की दृष्टि से विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। शारीरिक अवस्था की दृष्टि से, जैसे अधिक चर्बी वाले अर्थात मोटे व्यक्तियों द्वारा
स्निग्ध पदार्थों, घी, मक्खन, तेल आदि का सेवन तथा क्षीण, क्रश या पतले, मनुष्य द्वारा रूक्ष और हल्के या लघु पदार्थों का सेवन। कर्म की दृष्टि से जैसे नित्य कर्म अर्थात मलमूत्र त्याग, स्नान आदि से पहले खाना, भूख न लगने पर भी भोजन करना तथा अधिक भूख लगने पर भी भोजन न करना। निषेध की दृष्टि से कुछ विशेष पदार्थों के सेवन के बाद उनके कुप्रभाव से बचने के लिए किसी अन्य विशेष पदार्थ का सेवन अवश्य करना चाहिए या उसके बाद किसी पदार्थ का सेवन सर्वथा नहीं करना चाहिए। इस नियम का उल्लंघन करना निषेध की दृष्टि से विरुद्धा आहार है। जैसे घी के बाद ठंडे जल आदि पदार्थों का सेवन करना, जबकि घी के बाद गर्म जल या गर्म पेय लेने का विधान है। गेहूं व जौ से बने गर्म भोजन के साथ ठंडा पानी पीना, भोजन के बाद व्यायाम करना इत्यादि। पकाने वाले ईंधन की दृष्टि से जैसे दूषित ईंधन से पकाया अथवा ठीक प्रकार से न पकाया गया कच्चा, बहुत पका या जला हुआ भोजन। संयोग की दृष्टि से कुछ पदार्थों को एक साथ या आपस में मिलाकर खाना संयोग की दृष्टि से विरुद्ध आहार है। जैसे खट्टे पदार्थों को दूध के साथ खाना, दूध के साथ तरबूज या खरबूजा खाना, दूध के साथ लवण युक्त पदार्थों का सेवन करना। रुचि की दृष्टि से अच्छे न लगने वाले भोजन को विवस्था से तथा रुचिकर भोजन को भी अरुचि से खाना। गुण संपन्न या उत्कृष्टता की दृष्टि से रस रहित उत्पन्न होकर नष्ट हुए रस वाले, विकार युक्त रस वाले द्रव्य का सेवन करना। विधि की दृष्टि से भोजन संबंधी आचार संहिता का पालन न करते हुए आहार करना। इन सभी प्रकार के विरुद्ध आहारों के उदाहरण आपको यहाँ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। दूध के साथ क्या विरुद्ध है? दही, नमक, मूली, मूली के पत्ते, अन्य कच्चे सलाद, सहीजन, इमली, खरबूजा, बेलफल, नारियल, आम्रतक, आमड़ा, नींबू, लीकुच, करौंदा, कमरख, जामुन, कैंथ, पारावत, अनार, आंवला, गलगल, तोरई, गुड़, तिलकुट, कुलथी, उड़द, मोठ, निष्पाव, तंतु, वनक, सत्तू, तेल तथा अन्य प्रकार के खट्टे फल या खटाई, मछली आदि विरुद्ध हैं दूध के। दही के साथ क्या विरुद्ध है? खीर, दूध, पनीर, गरम पदार्थ व गरम भोजन, खीरा, तरबूज, ताड़ का फल आदि विरुद्ध हैं। खीर के साथ विरुद्ध हैं कटहल, खटाई, दही, नींबू आदि, सत्तू, शराब आदि विरुद्ध हैं। शहद के साथ विरुद्ध हैं काकमाची अर्थात मकोई, घी, समान मात्रा में पुराना घी, वर्षा का जल, तेल, वसा, अंगूर, कमल का बीज, मूली, ज्यादा गर्म जल, गर्म दूध या अन्य गर्म पदार्थ, कुसुम का साग, शारकर, शर्करा से बना शरबत और मेरे, खजूर से बनी मदिरा आदि विरुद्ध हैं। शहद को गर्म करके सेवन करना निषिद्ध है। शीतल जल के साथ क्या विरुद्ध है? घी, तेल, गर्म दूध या गर्म पदार्थ, तरबूज, अमरूद, खीरा, ककड़ी, मूंगफली, चिलगोजा आदि विरुद्ध हैं। गर्म जल या गर्म पेय के साथ विरुद्ध क्या है? शहद, कुल्फी, आइसक्रीम व अन्य शीतल पदार्थ विरुद्ध हैं। घी के साथ विरुद्ध हैं समान मात्रा में शहद, ठंडा जल विरुद्ध है। खरबूजा के साथ विरुद्ध है लहसुन, दही, दूध, मूली के पत्ते, पानी आदि। तरबूज के साथ विरुद्ध है ठंडा पानी, पुदीना। चावल के साथ है सिरका विरुद्ध है। तिल की पिट्ठी के साथ पोदिका अर्थात पोई को पकाकर खाना विरुद्ध आहार है। नमक के साथ अधिक मात्रा में अधिक समय तक खाना मात्रा विरुद्ध है। अंकुरित धान्य, चने आदि के साथ कमल, नाल विरुद्ध है। कच्चे अंकुरित धान्य के साथ पका हुआ भोजन विरुद्ध है। मकोए के साथ में पिपली, काली मिर्च, गुड़, शहद विरुद्ध है। जिस बर्तन में मछली पकाई हो उसमें रात भर रखा मकोए का शाक घातक विरुद्ध आहार है। उड़द की दाल के साथ मूली विरुद्ध है। केला के साथ में मट्ठा विरुद्ध है।
घी के साथ में कांसे के बर्तन में 10 दिन या अधिक समय तक रखा हुआ घी विषाक्त हो जाता है। दूध, सीरा और खिचड़ी के साथ में इन तीनों को मिलाकर खाना विरुद्ध आहार है। इस प्रकार के विरुद्ध आहार के सेवन से शरीर के धातु और दोष असंतुलित हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इन सब का विचार करके ही खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। विरुद्ध आहार एवं विहार से उत्पन्न रोग। अब इनसे किस किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं? चर्म रोग, भोजन विषाक्तता, फूड पॉइजनिंग, नपुंसकता, विसर्प, जलोदर, पेट में पानी भरना, विस्फोट, बड़े फोड़े, भगंदर, अश्मरी, वात व्याधि, प्रमेह अर्थात मधुमेह आदि, उदर रोग, अर्श अर्थात बवासीर, कुष्ठ, गलित कुष्ठ, किलास सफेद दाग, मूर्छा उन्माद अर्थात पागलपन, स्मृति व चित्त का नाश, बुद्धि का क्षय, तेज अर्थात कांति का नाश, श्रोत्र आदि इंद्रियों का नाश, शोथ अर्थात सूजन, यक्ष्मा अर्थात टीबी, गुलम विद्रधि अर्थात फोड़े, दुर्बलता, रक्तपित्त, शरीर के किसी भी अंग से स्राव, गलग्रह गले का रोग, आद्यमान पेट में अफारा, आम विष आधे पचे भोजन के विष से उत्पन्न रोग, अलसक, विसूचिका मीन्स हैजा, विलंबिका, अमलपित अर्थात एसिडिटी, पीनस अर्थात गर्भ में स्थित भ्रूण की मृत्यु अथवा जन्मोपरांत तत्काल मृत्यु या गर्भ ही न ठहरना, अंधापन, रक्ताल्पता, गृहिणी, मंदाग्नि, मद अर्थात